Our today's class is for 11th. Subject is geology. The today's topic is what is texture. Texture of igneous rocks or sedimentary rocks or any other types of rocks. Texture means physical makeup of a rock. In other words, we can say size, shape and arrangement of grains in a rock. As the sedimentary contain particles of various size, green size, which is an important factor for the description of sedimentary rocks, which depends upon the size, the particles of sediments, which we can say on which the size depends, or to be classified into pebbles, gravel, sand, silt, and clay. And each of these particles or size of grains give rise to a particular type of rock. In other words, if we say the sand indicates loose greens such as sand at the beach, gravels, pebbles, and silt you are seen in the streams and rivers. On the basis of these, the texture, we can say the green size can be type of coarse green texture, fine green texture, glassy type of texture, especially in sedimentary rocks. There are three main types of textures: classic type, chemical, biochemical. Classic type of texture is basically the pieces of rocks, of old weathered rocks. Chemical type of igneous sedimentary rocks are formed due to the chemical process, as I have already told you in the previous classes when we discussed the sedimentary rocks, their types. And also the biochemical type of texture is a texture in the sedimentary rocks where the rocks have been formed by the biochemical processes. The shape of the constituent of grains of sedimentary rocks are considerably significant, or we can say shape of the constituents of grains of sedimentary rocks are of considerable significance in the study of texture. Chemically formed rocks may be contain rounded concretions. The texture and mineral composition of sedimentary rocks are of great value in determining the nature of the environment at the time when the sediments are deposited or sediments was deposited. They can be coarse grained greens, pebbles, cobbles, boulders, and blocks, or to be in the coarse grain type of texture. Or when we say there is a medium grain of texture, then sand size or micaceous type of clasts are present in that type of rock. And those rocks which have fine clasts, silt and clay, are to be categorized in fine grain texture. When we see the igneous rock textures, phenolitic texture, aphantic texture, porphyritic texture, glassy, pyroclastic, pegmatitic, these are the the terms which have been given to the different type of textures in igneous rocks. For example, phenolite type texture is that type of texture when in an igneous rock the greens are in coarse size, then we say it is a coarse green texture, and those greens are easily visible. Similarly, affinity type of texture is a type of texture in an igneous rock where there are fine grains present in the rock, and those grains are not visible unless and until we could not use a microscope. Porphyritic type of texture is a texture where large crystals set in fine grained or glassy. Similarly, glassy texture is a rock looks like a block of glass with no visible mineral crystals. Pyroclastic texture shows the texture, or we can say is a mixture rock fragments, pumice and volcanic ash. It is a type of fine grained texture. Pegmatite texture is also a texture where mineral grains are exceptionally large, almost about 3 centimeter long. These type of pegmatite textures, are found in the intrusive type of igneous rocks.
So this was almost all about the textures. If we try to understand in a way what is a texture, टेक्सचर का जो माने हैं, ये जो रॉक, जो एक सेडिमेंट्री रॉक हो या इग्नियस रॉक हो, इसका जो फिजिकल अपियरेंस ऑफ मेकअप है, जिसकी जो इसकी आउटसाइड की जो रॉक के पार्टिकल्स की जो बनावट है, उसका साइज, उनकी जो पार्टिकल्स रॉक फ्रेगमेंट्स जो होते हैं उनका साइज, शेप, अरेंजमेंट उन ग्रीन्स का जो उस इसके सरफेस पे रॉक के होती है, उनको टेक्सचर कहते हैं। उनका ग्रीन साइज कैसा है, शेप कैसी है, अरेंजमेंट क्या है उनका, उसको हम टेक्सचर कहते हैं। एज द सेडिमेंट्स कंटेन पार्टिकल्स ऑफ वेरियस साइज, ये जो सेडिमेंट्स होते हैं इनके बहुत सारे टाइप्स के साइज होते हैं इन पार्टिकल्स में, ग्रीन साइज में। वो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर रहता है ताकि हम एक जो सेडिमेंट्री रॉक है उसको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। किन चीज़ों में, कोर्स ग्रीन में, फाइन ग्रीन में या ग्लासी टाइप ऑफ टेक्सचर्स में। ये डिपेंड करता है साइज ऑफ पार्टिकल्स इन सेडिमेंट्स के ऊपर, जो क्लासिफाई कर जिनको हम क्लासिफाई करते हैं पेबल्स में, ग्रेवल्स में, सैंड, सिलिट, क्ले, इन्हीं बुनियाद पे रॉक्स को टेक्सचर दिया जाता है कि उसमें पेबल्स है, ग्रेवल्स है, सैंड है, सिलिट है या बाकी टाइप की लूज, ऐसे सैंड लूज मटेरियल है जिस तरह बीच पे सैंड होती है, सैंड के दाने होते हैं। इस तरह से एक इनकी बनावट से एक पर्टिकुलर टाइप की रॉक बन जाती है। ये शेप जो इन दानों की, इन फ्रैगमेंट्स की, ग्रेन्स की सेडिमेंट्री रॉक्स में जो होती है, ये इनकी अहमियत ऐसी होती है ताकि इनसे हमें पता चलता है कि इस रॉक का टेक्सचर क्या है। दैट इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट the green size, shape, size, arrangement depends upon the texture depends upon these factors, these things. So we must keep in mind that the shape, size means the size of pebbles, gravels, sand, silt, and etc. Different types of constituents of rock, which are considerably significant in the solidity of texture. Chemically formed rocks may contain rounded concretions. जो ये chemically rocks होते हैं इनको rounded concrete, कोई ऐसे भी rocks हैं जिनको angular concretions होते हैं। ये जो टेक्सचर होता है या मिनरल कंपोजिशन सेडिमेंट्री रॉक्स का होता है, इसमें एक बहुत ही बड़ा अच्छा वैल्यू इनका होता है, ग्रेट वैल्यू होता है। किस लिए? ताकि ये डिटरमाइन करेंगे हमें कि ये किस एनवायरनमेंट में, किस टाइम में डिपॉजिट होती है। इन ग्रीन साइज पे ही, इस टेक्सचर पे ही डिपेंड करता है कि ये रॉक कहाँ पे, किस एनवायरनमेंट में बन चुकी है। इसी तरह से इग्नियस रॉक से डिफरेंट जो टेक्सचर्स है, फेनेराइटिक है, इसमें कोर्स ग्रीन टेक्सचर होता है जिसको हम अच्छी तरह से देखते हैं, विजिबल होते हैं। एफेंटिक जिसमें फाइन ग्रीन्स होते हैं। पॉरफराइटिक जिसमें लार्ज क्रिस्टल्स, और गिलासी जिसमें गिलास टाइप का होता है या ब्लॉक्स होते हैं। इसी तरह पायरोक्लास्टिक, इसमें मिक्सचर रॉक फ्रेगमेंट्स, प्यूमाइस या वोल्केनिक ऐश होता है। इसी तरह से पेग्मेटाइट टाइप ऑफ टेक्सचर जो ये स्पेशली ये फाउंड हमें मिलता है इंट्रूसिव टाइप ऑफ रॉक्स में। इनका जो लेंथ जिनकी है 3 सेंटीमीटर होती है। इसी तरह से जो जिसको हम कोर्स ग्रीन टाइप ऑफ टेक्सचर कहते हैं, उसमें ग्रेन्यूल्स, पेबल्स, कोबल्स, बोल्डर्स एंड ब्लॉक्स होते हैं। जैसे जिसको हम मीडियम टाइप का टेक्सचर नाम देते हैं, उसमें सैंड साइज आरेनेशियस टाइप क्लास्ट्स होते हैं। और जिसको हम फाइन ग्रीन टेक्सचर, उसमें सिलिट और क्ले साइज का मटेरियल होता है। सो दिस वाज ऑलमोस्ट ऑल अबाउट रिगार्डिंग द definition, or we can say, in other words, we can say that the texture can be easily understood, that this is the overall physical makeup of a rock, in which we can say साइज, शेप और बाकी जो ग्रीन्स का अरेंजमेंट होता है। ओवरऑल अपीयरेंस जो रॉक की होती है ग्रीन साइज पे डिपेंड करती है, और उस ग्रीन साइज को कैटेगराइज करके हम उसका टेक्सचर बता सकते हैं। ऑलमोस्ट दिस वाज ऑल अबाउट regarding the texture, in which we have seen coarse greens, where we have categorized it medium greens and fine greens type of particles in this class. So this was almost all about regarding the texture of rocks.